What is phonetic alphabet? Phonetic alphabet is divided into three categories: vowels, semi-vowels, consonants. Now, these vowels are further divided into three: monophthongs, single sound; diphthongs, two sounds together; three sounds together. यहाँ पे two sounds, यहाँ पे three sounds, and octatones. They are divided into plosives, affricates, fricatives, and consonants. Other part is sonorants, nasals, laterals, and liquids. Further, we will study each sound separately, and I'm certain you can understand it. Maybe you can find a little bit difficult, but I'll never say it's difficult for you. Now, more concepts have been clarified. क्या नहीं? So, अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे साउंड्स को, लेकिन मेरे भाई एक और चीज भी मैं यहाँ पे जरूरी समझता हूँ कि डिस्कस कर दूं, क्योंकि जब हम फोनीम्स में वो डुबकी लगाएंगे ना, तो फिर ये जो बेसिक्स का मैंने बैकग्राउंड आपको दिया है, ये काम आएगा। मेरे ख्याल में से अगर डायरेक्ट हम फोनीम्स को टच करेंगे तो आपके काफी सवालात आपके दिमाग में घूमेंगे। अब भी बिल्कुल आएंगे सवालात, लेकिन थोड़े आएंगे। ओके, ये भी मैं मिटा दूं और दूसरे पे आते हैं। तो अभी मेरे ख्याल में से काफी बहुत लंबी ये वीडियो हो गई ना, तो अभी दें इजाजत। अगले सबक तक जल्दी हाजिर होते हैं। Thank you so much. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.